Hello people, welcome back to my YouTube channel EcoAda Way to Economic. I hope you all are doing good. As you know, this channel is all about the subject economics. You will get all the topics from class 9 to 12. All the videos are available in the playlist. So please go and watch them. And make sure you subscribe this channel and don't forget to press the bell icon to get the notifications of the upcoming videos. Also, do press the like button, share the videos with your friends and make sure to leave a comment कि आपको वीडियो कैसी लगी. So today we continue NCERT class 11th part A, Statistics in Economics chapter 4, Presentation of Data. Today's topic is frequency distribution. In statistics, it provides the information of the numbers of occurrence. एक events जो है वो कितनी बार occur हो रहा है, that is known as the frequency of distinct values distributed within a given period of time or interval. एक particular time के अंदर events कितनी बार frequently हो रहा है, that is known as the frequency distribution. It is in the form of list or we can present the data in the form of table और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हिस्टोग्राम. इट इज़ द पॉपुलर ग्राफिंग टूल. इट इज़ यूज्ड टू समराइज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डेटा दैट आर मेजर्ड ऑन एन इंटरवल स्केल. सो डेटा चाहे डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो, इट शुड बी मेजर्ड ऑन द इंटरवल स्केल. ओके, सो द हिस्टोग्राम लुक लाइक दिस. यहाँ पर जो ग्राफ्स होते हैं, जो बार्स होते हैं, दैट शुड बी इन द कॉन्टीन्यूस फॉर्म. कॉन्टीन्यूस मीन्स उनके बीच में गैप्स नहीं होते हैं जैसे बार ग्राफ में होते हैं. आई होप आपको इमेज से समझ आ रहा होगा कि हिस्टोग्राम जो है वो बार ग्राफ से कैसे डिफरेंट है. ओके, so the next topic is importance of a histogram. Creating a histogram provides a visual representation of data distribution. So it provides the visual representation to the data. Secondly, it can display a large amount of data and the frequency of the data value. तो यहाँ पर हम large data को cover करके उसकी frequency show कर सकते हैं जैसे कि हम telemark में करते हैं. Third, the median and the distribution of data can be determined by a histogram. So यहाँ पर हम data का median भी निकाल सकते हैं by using the histogram. In addition, it can show any outliner or a gap in the data. और ये कोई gap भी present नहीं करता है. Okay, so this topic is over here. I hope आपको इतना समझ आया होगा. So thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video. And if you like the content, please do like, share and subscribe to this channel. And don't forget to press the bell icon to get the notifications of the upcoming videos. See you soon with the next video. Till then, thank you.